Uh, I'm Reyan Hameed, and today is our session about the introduction to legal research and content writing. Mr. Amar is going to address all the interns about the session, and I'm just going to give a starter with introducing myself. I'm Reyan Hameed and head of operations. I'll be teaching SEO content writing, which is going to be our next topic in next sessions. So I'm just here to host the session, and our lead guest is Mr. Amar Ibn Munir. Answer a short question with a short answer before we get started. The question is, why Wakalat Online is offering the free course? What is the reason behind offering the course, which is much valuable, which takes energy, which takes stamina, which takes a team to manage, and such kind of courses are not offered in free. But Wakalat Online is not only dedicated to offer this course, but we are dedicated to proceed this course in a professional manner. So the reason behind offering such course is to train legal students in research writing, in such kind of research writing which is the future of legal research writing. We can see uh, a prominent research writers are writing journals, and they have marked themselves in the history, and tremendously they have performed tremendously. But the future is digital. Those who can write things in a digital manner, internet friendly, just they are going to be mark the next upcoming in the future. So this is the main purpose. And why we are offering, we are going to train the legal students, we are going to train the generation. This is the vision behind this course. And ending with this answer, I would like to call Mr. Amar, who just not only a tremendous and remarkable writer, a well-known writer, but his articles are published by HAC, and his scholarly papers are published in 44 journals, law journals, and one of his article is presented in conference. So we have a lot to learn from Mr. Amar. Mr. Amar is with us. I will just address our interns. Don't let this opportunity go. Grab your notes and start writing what Mr. Amar teaches. Mr. Amar, please open your mic. Jazakallah, thank you so much. First of all, I would like to commend your efforts in mashallah arranging such a session, and also arranging such an institution, and making it free of cost. ये mashallah काफी अच्छी बात है, and I'm very very happy क्योंकि you know better than me, and a lot of us know how our legal research, particularly in legal research and other such legal resources, they are not free, and even if they are free, most of the time they are not worth the quality. मतलब उसकी quality देखा जाए, they're mostly commentaries. उसमें बकायदा बस एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, और साथ केस लॉ वहां दिया जाता है कि भाईजान ये प्रोपोजिशन है, ये केस लॉ है, बस आपको आप इसे इस तरह संभाले, जो कि दिस इज नॉट द केस इन अदर कंट्रीज. वहाँ बकायदा अच्छे खासी किताबें होते हैं, वहाँ बकायदा अच्छे खासे आर्टिकल्स होते हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग हैं और भी ज्वाइन कर रहे हैं इंशाल्लाह, एंड आई एम वेरी वेरी हम्बल्ड एंड फ्लैटर्ड कि आपने हम जैसे लॉ स्टूडेंट को यहाँ बुलाया. हम भी लॉ स्टूडेंट है, एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच कि आपने हमारे क्या कहते हैं इतनी एहतराम किया. थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह. ये हमारे इस मुल्क में भी क्या कहते हैं ये बहुत कम होता है कि यू गेट एक्नॉलेज फॉर दिस. एंड आई वुड जस्ट लाइक टू मेक वन करेक्शन कि आपने मतलब क्या कहते हैं जो मेरे 44 आर्टिकल्स उनमें से 3 पब्लिश्ड है, जो बाकी वो मतलब कुछ पेंडिंग है, कुछ नहीं है. मैं उसमें आ जाता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या होता है बिटवीन अपलोडेड एंड ड्राफ्ट आर्टिकल्स में, वो आ जाता हूँ उसमें आखिर में. सो विदाउट फर्दर अडू आई विल बिगिन. एंड हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप में से किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो उसे नोट डाउन करें, एंड आपको या आप यहाँ कमेंट करें गूगल मीट में, एंड हम फिर आखिर रिसर्च मतलब क्या है एंड इसका इम्पोर्टेंस क्यों है. सेकेंडली वी विल डिस्कस व्हाट वी thoroughly mean by research, आगे इसका क्या आगे करना है, हाउ वी फॉर्मेट इट, हाउ वी राइट इट. तीसरा हम करेंगे फिर लिटरेचर रिव्यू,
सोते हम आ जाएंगे फिर साइटेशन मैनुअल, आखिर में आ जाएंगे हम व्हाट डू वी कॉल इट, आखिर में हम आ जाएंगे जर्नल्स, हाउ टू पब्लिश इन अ जर्नल, how to uh, how to publish in a journal, how to contact them, and आखिर में हम आ जाएंगे फिर क्या कहते हैं how to make quality articles, मतलब we'll at the end we'll bring it all together. So first of all, research का मतलब क्या है? अगर if we like to think of research as something, you know, कि हमने बहुत ज्यादा किताबें पढ़े हैं, we've read a lot, we've read so many books such and such and such, and you know that is accurate to a certain extent. किताबें पढ़ना is just a very very small step in it. What we call this material gathering basically, कि आप basically आप किताब लेते हो, आप उसे पढ़ते हो, आप एक और लेते हो, आप उसे पढ़ते हो, मतलब of course no, of course in these type of things you must read a lot, no doubt, but the question is for research, मतलब ऐसे भी लोग होते जो बस पढ़ते रहते लेकिन आगे कुछ लिखते नहीं, तो इसमें कोई मतलब फर्क है? हाँ, there is a difference. When we discuss research, we mean rigorous reading, rigorously studying, rigorously making efforts to learning something. हमने इंतहाई ज़्यादा मेहनत करना है एक पर्टिकुलर पीस ऑफ नॉलेज गेन करने के लिए. सो फर्स्ट वी आर रीडिंग इन जनरल. हमने फॉर एग्जांपल टॉर्ट की कुछ किताबें पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट के पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं पढ़े मतलब कोई किसी और लिटरेचर फिलोसफी की किताबें पढ़े, एक्सेट्रा. दैट्स जनरल. But for example, for research, the first step you have to do is, you know, you have to gain interest in a topic, interest in a particular subject, in a particular material, which you would like to feel, which you would feel like that you would like to write on this. ठीक हो गया? So the first step is that you must understand that to research, it is like jumping in a rabbit hole. आप एक बार छलांग मारते हो, आप कभी रुकते नहीं हो. You keep on jumping. ठीक हो गया? यू आर गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग, आप नहीं रुकते, आपको नहीं पता चलता आप कब रुकोगे. सो इट्स वेरी रिगोरस, इट्स वेरी वेरी रिगोरस. इट इज वेरी सिमिलर टू, यू नो, आप लोग इंटर्न्स में हैं मेरे ख्याल में, तो आपको पता भी होगा, आपके सीनियर आपको प्रोपोजिशन देते हैं, आप फिर लॉ साइट में जाके केस लॉ ढूंढते हो, तो वो कहते हैं यार केस बहुत बड़ा है तो ज्यादा केस लॉ ढूंढो, तो आप अच्छे खासे ढूंढते रहते हो, ढूंढते रहते हो, ढूंढते रहते हो. यू ट्राई टू फाइंड, and in that you find the biggest cases, you find the smallest cases, you gather them together, and of course he will tell you to format it in some way, or he says just send the citations to me and whatnot. This is similar, but it goes to an even higher extent. ठीक हो गया? So the first thing you do is you pick out a topic. आपने टॉपिक ढूंढ लिया. फॉर एग्जाम्पल, आपने जब टॉपिक ढूंढ लिया ना, आपने ऐसे टॉपिक नहीं ढूंढना जो जनरलाइज्ड हो. यू हैव टू बी स्पेसिफिक. आपने स्पेसिफिकली एक टॉपिक ढूंढना है. एग्जाम्पल लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट के. सो इमेजिन अ पाई और अ पिज्जा. ठीक हो गया? आपने उसके स्लाइसेस काटे. जो आपकी पिज्जा है ना, दैट्स द होल सब्जेक्ट, दैट्स द सब्जेक्ट, दैट इज अ होल पर्टिकुलर बिग टॉपिक लाइक कॉन्ट्रैक्ट. उसके स्लाइसेस में जो है ना, क्या कहते हैं, उसमें आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए, आपके आ गए क्या कहते हैं, unenforceable contracts, enforceable contracts. So these are your specified topics. But even then आपने slices नहीं choose करना, आपने उस slice के अंदर एक छोटा सा piece choose करना है. That is your article. In that small particular piece, you will write your article on that. For example, जो the piece of the pizza, the slice of the pizza that says elements of contract. ठीक हो गया? आप उसमें से एक एलिमेंट चुनते हैं, आप चुनते, you choose capacity. So capacity is your topic. ठीक हो गया? So now you've chosen your topic. What the next step is then what we call literature review. अच्छा, literature review. By literature review we mean आपने for you're now researching even more. आपने अपने research आपने sources ढूंढने हैं, sources of authoritative sources ढूंढने हैं. आपने अच्छे खासे sources ढूंढने हैं जिसके ऊपर आप उसकी बुनियाद पे आप कुछ और knowledge gain करते हो on that particular topic. For example, now in Pakistan, when you're writing about contract, you know that there are 2 or 3 books written on contract. ठीक हो गया? आप पहले उन्हें कंसल्ट करोगे. What do they have to say about contract? मतलब when you're writing an article or when you're writing a chapter of a book, you have to consult all the sources there is available, even sources you disagree with. ठीक हो गया? और उसमें आपने फिर ये देखना है कि why this piece of material, why this source is good, why this source is bad. You have to critique it. आपने पॉजिटिवली देखना है कि why this particular source
is correct or is correct to you, or why do you feel that, and आपने फिर देखना है कि दूसरे source जो bad source है, you say this is not a correct source, you have to explain why you don't think it's a good source. ठीक हो गया? uh, और उसके अलावा we live in a common law, we live in a country that follows the common law legal system. The common law legal system, of course, has the doctrine of stare decisis. So whenever you're writing an article on a law, the first thing you do, just like any lawyer does, you check the law. ठीक हो गया? And then you see precedent. आप cases देखते हो. तो इसमें आपने फिर cases भी देखना है. Though that's your other source. Cases, precedents. What are the judges saying? आपने उन तमाम judgments को देखना है. आपने देखने हैं क्या ये जज सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ठीक बोल रहा है. ठीक हो गया? You have to see whether their interpretation of law, whether their reasoning of law is correct, is incorrect, and you have to see all the cases. You have to start from 0 to 100, जितनी भी तमाम केस लॉ है या जितना पॉसिबल है. मतलब अगर बहुत ज्यादा है, बेशक उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप वो चुन लो. ठीक हो गया? फॉर एग्जांपल, हमारे बड़े स्कॉलर्स है, यहाँ हमारे बड़े स्कॉलर्स हैं, जैसे कि क्या कहते हैं हमारे आप लोग जानते होंगे शहबाज अहमद चीमा साहब है, डॉक्टर जुबैर अब्बासी, डॉक्टर मोहम्मद मुनीर. इफ यू रीड देयर आर्टिकल्स यू विल फाइंड कि वो लोग जब लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल फैमिली लॉ में हो गया, सो डॉक्टर मुनीर साहब लुक्स एट व्हाट इस्लामिक लॉ सेज, ही लुक्स एट व्हाट द लॉ सेज, देन ही लुक्स एट व्हाट द जजेस आर सेइंग, देन ही इज गिविंग क्रिटिक whether the judges are saying the correct thing or the incorrect thing. ठीक हो गया? So this is how you critically analyze, how you critically come down. आप कैसे आते हो, आर्टिकल कैसे लिखोगे आप, आर्टिकल में किस तरह आपने एनालाइज करना है. ठीक हो गया? So we have found out two important things. The first is rigorous amount of research. The second is literature review. हमें ये पता चल गया कि पहले आपने रिसर्च टॉपिक एक ढूंढना है. ठीक हो गया? सो यू फाइंड अ रिसर्च टॉपिक, देन यू हैव टू कंसल्ट मल्टीपल सोर्सेज. आपने किताबें देख लिया, केस लॉ देख लिया, इसमें आप और भी आर्टिकल्स देख सकते हैं. समवन माइट हैव रिटन अदर आर्टिकल्स. और आजकल का जमाना ऐसा है कि आप क्या कहते हैं, आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं किताबें. ठीक हो गया? So you look in the internet, you will find lots of PDFs, you will find lots of journals. सबसे पहले we got research topic, you've chosen the topic, you have to choose it specifically, you cannot make it too generalized. ठीक हो गया? बिकॉज आप बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं फिट कर सकते एक पेज में. और ये मैं आखिर में आऊंगा क्यों. दिस विल बी इन जर्नल्स, हम जब जर्नल्स के टॉपिक डिस्कस करेंगे. एंड यू नो इट्स ऑल्सो इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि आप एक ही आर्टिकल में कॉन्ट्रैक्ट की क्या कहते हैं वो भी लिख के कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है, अग्रीमेंट से क्या कैसे डिफरेंट है, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है. Because all of them have so much material, it depends on the amount of material, and I will guarantee you this, each small topic has a lot of material on it. आप बकायदा इंग्लैंड की देखोगे, you will find online a lot of English people have written books. There will be lots of journals in America, in England, and you know other such countries. उनके तमाम journals लिखे होंगे, फलाना law review, फलाना law journal, such and such and such. Just like in Pakistan, we have the Lums Law Journal, we have the Islamabad Law Review, we have like other such law reviews. So you must also consult them. You must see if there's anyone who has written something and whether he has written something good and or something not. So इससे हमें ये भी पता चलता है कि there are two ways to doing literature review. One is the classical way. आप लाइब्रेरी जाओ, किताबें ढूंढो, किसी से किताबें मंगवाओ, किताबें पढ़े. ठीक हो गया? The second way is online. और आजकल का दौर ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन भी बड़ा मटेरियल मिल जाता है. ठीक हो गया? And of course, when it comes to case law, उसका भी ये हिसाब किताब है. You have the PLD digest, you have PLJ. They come in hard copy as well, and they're also available on the law site. So of course, for upcoming law students who are especially new law students, उनके लिए बड़ा मसला बन जाएगा कि वो कैसे ढूंढ ले. उनके लिए मैं ये एडवाइस दे सकता हूँ कि आप अनरिपोर्टेड लॉ जजमेंट्स देखें, जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में मिल जाते हैं, जो तमाम हाई कोर्ट की वेबसाइट है उधर भी मिल जाते हैं. सो यू फाइंड जजमेंट्स इन अनरिपोर्टेड फॉर्म देयर. ठीक हो गया? But even then, if you could consult some law professor, someone, if you could provide you with case law, that is also okay. There is no problem in that as well. ठीक हो गया? माजरत से अगर मैं कोई बहुत तेज जा रहा हूँ, आखिर में क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं फिर इसे फिर एक्नॉलेज करूंगा. Anyway, so the third step. Now you have your
topic, you have consulted the sources, you have went here and there. The third step is that you have to follow a citation manual, citation style जिसे हम कहते हैं, या citation methodology कह दो इसे. ये research methodology का बहुत बड़ा एक बुनियाद है. There are multiple manuals you can choose. There is the Chicago manual, there is the there is a Schola, there is the author date system जिसे हम APA कहते हैं, and such. ये चीजें आपको ऑनलाइन भी मिलते हैं. But even better, it's when you read books, you will see those methods of citation. आपको मिल जाएगा कि ये लोग कैसे करते हैं. और अगर आप रिसर्च आर्टिकल्स देखोगे, उसमें भी आपको मिल जाएगा कि रिसर्च आर्टिकल्स में भी आपको मिल जाएगा कि उनने कैसे साइटेशन स्टाइल किया. फॉर एग्जांपल, अब इन सारे साइटेशन स्टाइल्स में फ़र्क भी होता है. सो यू मस्ट फॉलो वन पर्टिकुलर. आप ये नहीं कर सकते कि एक आर्टिकल में दो मुख्तलिफ किस्म के साइटेशन स्टाइल फॉलो करें. यू मस्ट फॉलो वन एट अ टाइम. ठीक हो गया. और फिर मैं बाद में इस पे वापस भी आऊँगा जब हम जर्नल से कनेक्ट करेंगे कि जर्नल में ये किस तरह रेलेवेंट होता है. सो एनीवे, साइटेशन स्टाइल का ये फ़ायदा होता है और इसका ये सबसे बड़ी अहमियत होती है कि when you cite, you're citing a source, you're giving respect to the source and you're saying this man said this before me, कि इस आदमी ने ये बोला है. आजकल का ज़माना भी वो कॉपी पेस्ट वाला आ रहा है. काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, they will copy paste another's work, they will not cite him at all, and then उनकी फिर बाकायदा जब प्लेजरिज्म टेस्ट होता है तो उसमें फिर बड़ा मसला आ जाता है, बिकॉज प्लेजरिज्म जो है ओवर 19% इज नॉट अलाउड. जब 19% से ज्यादा होता है ना आपकी, मतलब फिर दे विल रिजेक्ट योर आर्टिकल, विल बी रिजेक्टेड, इट विल बी कंसिडर्ड अ प्लेजराइज्ड पीस. ठीक हो गया. सो इट इज बेटर यू साइट द सोर्स. और इसमें एक और बात आ जाता है, यू कैन नॉट साइट 5% ऑफ द सेम सोर्स, more than 5%, and in some cases it's more than 3%. Some I will again address this when we come to journals. ठीक हो गया. So for a Schola, you have Schola की methodology ये होती है, ये वैसी ऑनलाइन भी मिलती है आपको, and again journals पे भी मिलती है, articles जब पढ़ोगे, किताबें पढ़ोगे तब भी मिलती है. I'm again saying this, but I will just demonstrate. It is the name of the author, for example Amr ibn Munir, and then आगे आपने कॉमा किया है, एंड देन यू पुट इन्वर्टेड कॉमास, आपने इटैलिक्स में लिख दिया फलाना बुक, नेम ऑफ बुक, फिर आप सच एंड सच, फिर आपने क्या कहते हैं कॉमा करके ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिख दिया आपने लिख दिया नेम ऑफ पब्लिशर एंड द डेट ऑफ पब्लिकेशन. ठीक हो गया. एंड देन आपने आगे क्या कहते हैं ब्रैकेट क्लोज किया. और हाँ, एक और बात है, जब डेट ऑफ पब्लिकेशन के बाद ना आप मतलब डेट ऑफ पब्लिकेशन से पहले ना आप मतलब कोई सेकंड थर्ड एडिशन है तो आप लिखोगे आफ्टर नेम ऑफ पब्लिशर थर्ड ईडी डॉट 2016 ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर आप लिखो कोई पेज नंबर 3 लिख दोगे, 2 लिख दोगे, जो भी लिख दोगे. सो फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद मुनीर, आपने मेरे ख्याल में वो किताब पढ़ा होगा प्रेसिडेंट, जिनने नहीं पढ़ा होगा यू गेट द पॉइंट. एनीवे, प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान, मोहम्मद मुनीर, प्रेसिडेंट इन पाकिस्तानी लॉ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के बाद आप लिखोगे, अब इसकी कोई एडिशन और नहीं आई तो आप डायरेक्ट डेट लिखोगे 2014, फिर आप आगे पेज नंबर लिख दोगे. एंड फॉर एग्जाम्पल आपने सक्सीडिंग पैराग्राफ में, सक्सीडिंग लाइन में भी मतलब वही सोर्स फिर यूज किया है. आप फिर लिखोगे आई बी आई डी, आई जो होगा कैपिटल होगा, बी आई डी नॉन कैपिटल होगा. एंड अगेन फॉर एग्जांपल आपने वो सोर्स काफी, उस सोर्स के बाद आपने कोई और सोर्स यूज किया, कोई रिसर्च पेपर यूज किया, कोई जजमेंट आपने साइट किया इन. ठीक हो गया. एंड अगेन समवेयर डाउन द लाइन आपने फिर वो सोर्स यूज किया. आपने फिर पूरा सोर्स नहीं यूज कर, पूरा नाम नहीं लिखना, आपने बस फॉर एग्जांपल शॉर्ट एंड वर्जन में लिखना है. शॉर्ट एंड वर्जन फॉर एग्जांपल मुनीर प्रेसिडेंट, फिर पी अगर एक पेज है P17, या अगर 2 पेजेस है PP.17-18 till 18. ठीक हो गया. एंड अगेन दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ Oscola ओनली, एंड दिस इज ऑल अवेलेबल ऑनलाइन. तमाम यूनिवर्सिटीज हो गए वो हमेशा ये लोग अपलोड करते हैं, या नहीं तो इनकी आप बाकायदा वेबसाइट जाओ, आप Oscola की वेबसाइट में चले जाओ, आप शिकागो मैनुअल की वेबसाइट में चले जाओ, आप API की वेबसाइट में चले जाओ. And again, so find a sort of citation manual, citation style you are comfortable with and use that. ठीक हो गया.
or use that when you're writing your article. अब इसमें हम आ जाते हैं बॉडी, हाउ टू राइट द आर्टिकल। ठीक हो गया, ये तो हमने साइटेशन स्टाइल की अभी बात की है। वी आर नाउ कमिंग टू राइटिंग एन आर्टिकल। अब जब आप आर्टिकल लिखते हो ना, सबसे पहले आप हाँ, मैंने एक और बात से वापस एक और बात पे वापस आ जाने, मैंने बोला कि यू आर कंसल्टिंग द सोर्सेज, आप सोर्सेज देखते हो, लिटरेचर रिव्यू करते हो, तो आप ना साथ साथ यू आर मेकिंग नोट्स, आप नोट्स भी बनाते हो। दैट्स ऑफ कोर्स आप उसे हाईलाइट करते हो, यू अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स। those same notes you will again use in your article. They can also be subheadings in your article. So the first thing you do is you put a format. आप एक अपने दिमाग में ना फॉर्मेट करते हो आर्टिकल को कि मैं यार ये कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे लिखूँ, क्या मैंने डिस्कस क्या करना है, मेरा मकसद क्या है, व्हाट डू आई वांट टू डू, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, हु एम आई क्रिटिसाइजिंग। सो फॉर एग्जांपल हम वापस कैपेसिटी की बात में आ जाते। सो यू आर डिस्कसिंग, आप स्टार्ट करते हो कि कैपेसिटी का मतलब ये, कैपेसिटी मींस दिस, यू फर्स्ट स्टार्ट, you first discuss the body of paragraph, दो तीन चार पैराग्राफ्स होंगे, in that you discuss what we mean by capacity, what is what is meant by capacity in other jurisdictions such as England or the USA, बाकायदा मुल्कों, and what it means in different law dictionaries। ठीक हो गया, फिर आप उसमें डिस्कस करते हो कि ये how it is developed and what it means in our law। ठीक हो गया, what it means in our law। हमारे कानून क्या कहते, तो हम कहते हैं सेक्शन 12, 13 या 14 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज दिस। और आप फिर उसे नीचे, अगर ज्यादा बड़ा लाइन है, इट्स मोर देन 40 वर्ड्स, तो आप उसे एक सेपरेट पैराग्राफ करके उसे इंडेंट करोगे। इंडेंट का मतलब है उस वो थोड़ा तमाम तीन चार लाइंस जो है आगे होगा। ठीक हो गया। आप अगर आप लोग ने लीगल ड्राफ्टिंग किया होगा, यू मे बी फेमिलियर विद व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो यू सेपरेट दैट because you're emphasizing that, say look, this is what is meant by capacity। ठीक हो गया, सेक्शन 10 ने ये बोला, फलाने ने ये बोला। तो आपने फिर ना फॉर एग्जांपल बता दिया कि कैपेसिटी का ये मतलब है, तो आप फिर आके ना आपने जो नोट्स बनाए, सब हेडिंग्स बनाए, तो आप उस पर आ जाते हो। कैपेसिटी के क्या कहते हैं, कैपेसिटी की क्या कंडीशंस है, आप कहते हो कि कैपेसिटी का ये कंडीशंस है कि पर्सन शुड बी एज ऑफ मेजोरिटी अंडर द लॉ व्हिच इज कॉन्ट्रैक्ट विद, पर्सन शुड बी ही शुड नॉट बी इनसेन, ही शुड बी सेन। ठीक हो गया, तो आप इसके मुताबिक लिख सकते हो कि ये आपका एक सब टाइटल हो गया, सब हेडिंग हो गया, कंडीशंस इन विच conditions in which capacity are applicable, or what is meant by what on or what is considered capacity under Pakistani law, या और capacity under Pakistani law। तो आपने ना एक अच्छा सा सब हेडिंग ढूंढना है, और इसी तरह फिर वापस सेन पे आ जाते हो। अब हमें ये भी पता है कि सेक्शन 12 ये भी बोलते हैं कि अगर कुछ टाइम पीरियड है ना, इंटरवल्स है, तो जिस इंटरवल में कोई बंदा जो है वो सेन है, इनसेन आदमी है लेकिन वो सेन है, तो उस वक्त तक उसका कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड भी होगा। तो आप उस पर भी आ जाते हो। आखिर में आ जाते हो इसकी इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटी। यू से इट इज वन ऑफ द मेन एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने मतलब उधर ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बोल दिया, you've already stated in the introduction that it is one of the main elements of contract without which a contract is not enforceable। So you say without capacity there can be no contract। फिर आपने आगे एक्सप्लेन करना है क्यों, why। ठीक हो गया, why is there। So you say the law says this, okay, the law says this, but we must also remember what the judges are saying in all cases। ठीक हो गया, आपने लॉ और जजमेंट्स को दोनों एक साथ लेके जाना है। तो हम वापस आ जाते हैं सेक्शन 11 पे कि वो कहते हैं कि यार एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए, तो आप फिर जजमेंट्स के बारे में लिखते हो। नाउ रिमेंबर, ठीक हो गया, सबसे पहले जब आप जजमेंट साइट करते हो तो आप उसकी जो ऊपर साइटेशन है पीएलडी 1947 एससी समथिंग, वो वही यूज करोगे। ठीक हो गया, the same citation they have given, you will use that same citation। this goes for even judgments in other countries। so you must also discuss the judgments। और इसमें आपने ऐसे डिवाइड करना है, you don't need to discuss each and every individual judgment। ठीक हो गया, आपने उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स डिस्कस करने हैं। तो आप पहले बोलोगे कि आप पहले एक जजमेंट को लिया, यू डिस्कस इट्स के फैक्ट्स कि ये हुआ था, ये मामला हुआ था, दिस वाज द प्रोपोजिशन डिस्कस, द जज सेड दिस। देन यू सी वेदर दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोर्ट इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, यू डिस्कस इट
कि इसकी जो इंटरप्रिटेशन है क्या है, ये लॉ के मुताबिक है या नहीं है। ठीक हो गया, आपने इस लेंस से देखना है। एंड यू डिस्कस मोर जजमेंट्स। फिर एक मसला ये आ जाता है कि बहुत ज्यादा जजमेंट्स है, तो हम अब क्या करें। In such a case, all you have to do is when you have discussed the main judgments for the remaining judgments, all you have to do is discuss the legal proposition या legal rule they have। उनने जो legal ruling किया है, उनने जो decision दिया हुआ है, जो हमारे अमेरिका में होल्डिंग उसे कहते हैं, जो हम कहते हैं ना रेशियो कहते हैं, कि उनकी रीजनिंग क्या है, उनकी डिसीजन क्या है। आप उसे बस लिखो 2 लाइनों में और उन तमाम जजमेंट्स को साइड करो साथ। ठीक हो गया। अच्छा, so you must always discuss the law and precedent together, and you must discuss them under separate headings। separate आपने नोट्स के साथ जो अपने हेडिंग्स बनाए उसके नीचे आपने डिस्कस करने हैं। फिर आखिर में हमें ये भी पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये कुछ नहीं आता, क्या कहते हैं, देयर इज नथिंग कॉल्ड वॉइड एब एनिशियो। ठीक हो गया। ये हमें पता चलता है कि जजेस ने बोला है, हमें बस इतना पता है कि ये नॉन इन्फोर्सेबल है, दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void। But by void ab initio we mean it became void from the start, that it was void since the start। So this is not mentioned in the law at all, so you must discuss this, and you must discuss case law concerning this very same proposition, whether the judges were correct, and if so to what extent। ठीक हो गया। आखिर में आप आ जाते हो कंक्लूजन में, what we call the main concluding paragraph। In the conclusion you will summarize your main conclusions that we have discussed this। हमें ये समझ आया, हमें ये पता चला है, हमें हमने हमें ये भी पता चला है कि कैपेसिटी का ये मतलब है, हमें पता चला कि कैपेसिटी हमारे लॉ के मुताबिक कैपेसिटी का ये कंडीशंस है, हमें ये पता चला कि जजेस की ज्यादातर जो पॉलिसी है, ज्यादातर जो रेशियो है, जो जुरिस्प्रूडेंस सेट हुई है पाकिस्तानी कोर्ट्स की, वो ये है। और हमें चाहिए कि हमें इस तरह करना चाहिए, या आपकी जो आखिर में रिकमेंडेशन है, आपके आखिर में जो वो है व्हाट यू कंसिडर टू बी योर स्कूल ऑफ थॉट, आप वो लिखते हो। फिर आप जाते हो वापस ऊपर। ठीक हो गया। यू गो एट द स्टार्ट ऑफ द आर्टिकल, then you write the introduction। in the introduction you are asking questions, आपके research questions के, आपके propositions कि ये questions हमने, ये questions that these were the questions that we discussed in this paper। for example, in this paper we have discussed what we mean by capacity, what is capacity under Pakistani law, what are the conditions of capacity, what what is the effect of capacity in a contract। ठीक हो गया। and what is the jurisprudence set by the Pakistani superior courts। देन उसके ऊपर आप कीवर्ड्स लिखते हो थोड़ा, इंट्रोडक्शन के ऊपर यू राइट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का ये फायदा होता है कि आप जब सर्च करते हो, वो फॉर एग्जांपल आपने सर्च किया कॉन्ट्रैक्ट, किसी ने सर्च किया तो वो सारे वो आर्टिकल आपका आ जाएगा, किसी और ने सर्च किया वो आर्टिकल उसकी सामने आ जाएगा कि ये आर्टिकल है। सो कीवर्ड्स में आप लिखते हो कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, यू स्पेसिफाई, यू चूज अ सर्टेन सेट ऑफ कीवर्ड्स like contract, agreement, contract act, legal Pakistani legal system, and section 12, section 13 of the contract act, etc. That is on you। उसके ऊपर आप abstract लिखते हो। अब abstract क्या होता है? Abstract is different from the introduction and conclusion because the abstract is basically a summary of the paper। You have to summarize what you have found out, what you are discussing and what you have found out in the paper। तो ये आप एक तरह से कह सकते हो कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का है, वो एक वो है कॉम्बिनेशन भी है, बट इवन मोर स्पेसिफिक, इवन मोर नैरोड डाउन। आप एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हो कि इन दिस पेपर वी हैव डिस्कस सच एंड सच, एंड द मेन फाइंडिंग्स ऑफ दिस पेपर आर सच एंड सच। ठीक हो गया। सो यू समराइज इट लाइक दैट। फिर आखिर में ना आपने हाँ, एंड इट इज बेटर कि आप पूरा ना आर्टिकल एक बार पढ़ो। यू रीड द होल आर्टिकल योरसेल्फ, देन यू राइट द एब्स्ट्रैक्ट। ठीक हो गया। ये हमेशा करो। एंड सारी बात है, आप बीच बीच पे करेक्शंस भी करोगे, ग्रामेटिकली करेक्ट करोगे, कुछ आप सेंटेंस बदलोगे, कुछ आप बेहतर करोगे, एक्सेट्रा। फिर आप लेकिन एब्स्ट्रैक्ट के लिए भी जरूर, बिफोर राइटिंग द एब्स्ट्रैक्ट रीड द होल पेपर, then you write the abstract। then above that you come up with a title, and the principle behind is that you have to think of something attractive। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। आपने ये डिस्कस करना है
आपने आपने मतलब अट्रैक्टिव सा टाइटल बनाना है कि लोग देख के ना आपके आर्टिकल डाउनलोड करें, आपके आर्टिकल ले ले and they read it. So it has to be a very attractive title. So you think, for example, the doctrine of capacity under law of contract, yeah, the jurisprudence of capacity, this and that. आपने बड़ी सोच समझ के एक बड़ी मजे से आपने वो बनाना है, क्या कहते हैं, टाइटल बनाना है, द टाइटल ऑफ द आर्टिकल, और उस टाइटल के नीचे पर आपने अपना नाम नाम लिखना है. सो दिस इज द मेन फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल. यू हैव द टाइटल, you have your name, then you have the abstract and abstract keywords, then the introduction, then you have the body of paragraph, then you have the conclusion. But remember, you first write the body first, then you write the conclusion, then you write the introduction, then you write the abstract, then you come up with the title. कि उसका ये फायदा होता है कि आप ये जब कंक्लूजन भी लिखते हो, आप पूरा आर्टिकल पढ़ते हो, और आप फिर जब बाकी तमाम चीजें भी लिखते हो, आप पूरा आर्टिकल पढ़ते हो, ताकि आपकी जो दिमाग में वो है ना, जो आइडिया बना हुआ है, यू आर एबल टू प्रेजेंट इट मोर थरली, यू आर एबल टू प्रेजेंट इट मोर कंसाइसली, इस बुनियाद पे. एनीवे, दैट इज हाउ यू राइट एंड फॉर्मेट एन आर्टिकल. और आखिर में हम आगे इस पे जर्नल्स पे. अच्छा, so a journal is basically like we see magazines, we see these things, what do we call it, newspapers में भी आते हैं, उसमें भी articles होते हैं. तो इसमें और जर्नल में ये फर्क है कि जर्नल में हमेशा एकेडमिक राइटिंग होता है, और जर्नल में ज्यादातर आपके एकेडमिशियंस editors होते हैं. They have a precise team of editors, they have a precise set of criteria. So every journal, for example, will have its scope and policy. They will say, we accept works that discuss such and such topics. For example, ये एमर बिलाल सुबी साहब का जो रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ रिव्यू है, वो ज्यादातर इंटरनेशनल लॉ के साथ डील करता है, पब्लिक पॉलिसी के साथ डील करता है. So in a journal you have to see what is its scope and policy before sending an article in it. और हर जर्नल की हमेशा एक क्राइटेरिया होती है. They call it the submission guidelines or the author guidelines. They will say that the author must write the article in वो पहले एक word limit देगा कि 8,000 words की होनी चाहिए, minimum 4,000, maximum should be 8,000, and they will even give you, and they will even provide you, they will even instruct you to follow a particular citation style. मतलब आपने अगर फॉर एग्जांपल स्कॉलर में पूरा आर्टिकल लिखा है एंड आपने एक जर्नल में भेजना है, लेकिन जर्नल जो है वो कहते हैं कि नहीं, हमें स्कॉलर में नहीं चाहिए, वी वांट इट इन एपीए, वी वांट इट इन द ऑथर डेट सिस्टम. यू विल देन एडिट योर आर्टिकल अकॉर्डिंगली टू फिट देयर रिक्वायरमेंट्स, टू फिट देयर क्राइटेरिया. अच्छा, अब हर जर्नल की ना एक वेबसाइट, आजकल वेबसाइट वाला दौर है, तो हर जर्नल की वेबसाइट्स होती है, वो उनकी एक खास मैकेनिज्म उनने दिया होता है वेबसाइट पे कि आपने ऐसे भेजना है, आपने ये करना है, इस तरह भेजो, एक्सेट्रा. लेकिन मोस्ट कॉमन तरीका ये होता है कि आप एडिटर को ईमेल करते हो, यू ईमेल इट टू द एडिटर. आपने मतलब एडिटर को ईमेल किया, एंड और ये याद रखना कि हर जर्नल के ना एडिटर्स होते हैं. देयर आर टू टाइप्स, द इंटरनल एडिटर एंड द एक्सटर्नल एडिटर. जो इंटरनल एडिटर होता है वो उसी यूनिवर्सिटी का होगा. फॉर एग्जांपल, लम्स लॉ जर्नल का जो एडिटर्स, इंटरनल एडिटर्स होंगे, वो लम्स के खुद प्रोफेसर्स अपने होंगे, दे विल बी एडिटिंग द आर्टिकल. लेकिन जो एक्सटर्नल होते हैं ना, उसमें फिर बाकायदा बाहर मुल्क के लोग भी हो सकते हैं, एंड नॉट इवन बाहर मुल्क, अपने पाकिस्तान की और यूनिवर्सिटीज के लोग हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के भी लॉ एडिटर्स होंगे, लॉ प्रोफेसर एडिटर्स होंगे. इट्स एडिटर EDITOR एडिटर. तो ये जो एडिटर होता है, ही विल सी योर वर्क, और वो ये काम देखेगा कि क्या ये आर्टिकल जो है हमारा क्राइटेरिया फिट करता है. ठीक हो गया. एंड इस एडिटर का काम ये होगा कि इस एडिटर का काम ये होगा कि ये क्राइटेरिया फिट करता है नहीं, या जर्नल का, डज इट फॉलो द जर्नल स्कोप एंड पॉलिसी, आर दे फॉलोइंग आर द साइटेशन मैनुअल वी हैव प्रिस्क्राइब्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और याद रखिए, जो अच्छे जर्नल्स होंगे ना, दे विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक हो गया. लम्स लॉ जर्नल में इवन टेक अप टू एन ईयर. और अगर आप बाहर मुल्क के जर्नल्स भेजोगे, ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लॉ रिव्यू, हार्वर्ड लॉ रिव्यू, they will take lots of time, they will take, because they're very rigorous. And इसका फायदा ये होता है कि they will edit the article for you grammatically, sentence structure बेहतर करेगा,
बहुत मजेदार कर देगा। लेकिन सबसे बड़ा काम ये करेगा, वो सजेशंस आपको देगा, कमेंट्स भेज देगा आपको। वो कहेगा यार आपने ये यूज किया, जरा इस तरह करो इसे, आपने यार ये सोर्सेस कंसल्ट करो, इसके साथ एक और सोर्स है इसे भी कंसल्ट करो, इसे भी ऐड करो। ये आपको बोलेगा कि ये जो अननेसेसरी आपने कुछ अननेसेसरी बातें किया है, मतलब हो सकता है कुछ, आई हैव सीन दिस हैपन एट अ लॉट, दे विल से यू नो दिस गोज अगेंस्ट दिस, इसका ये मसला बनेगा, तो वो कहेगा कि ये जरा काट, ये भी जरा काटो, दे विल टेल यू टू रिमूव इट। सो एनीवे, we have the editors, then they will send you back the manuscript, they will say कि you know do make these changes, then you make these changes, आप जाके आप जाके ये चेंजेस करते हो और आप वापस भेज देते हो। देन दे विल अगेन प्रोसेस इट, दे विल गिव इट अ सेकंड रिव्यू, देख लेंगे, and then they will either accept it or reject it। अगर एक्सेप्ट कर दिया तो कुछ ज्यादातर जर्नल्स जो है वो एक पब्लिशिंग फी भी आपसे लेंगे। इट कैन बी बिटवीन 20,000 टू अप टू 40,000, इवन up to even 45 I guess as well। So it will be somewhere between that range। ज्यादातर जो मैंने देखे, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस हुआ, वो ज्यादातर इन्हीं रेंज पे देखते हैं। और एक और बात ये याद रखिए कि जब आप आर्टिकल भेजोगे ना उन्हें फॉर रिव्यू, इट विल बी ब्लाइंड रिव्यू। ब्लाइंड मतलब वो आपको बोले आप अपने नाम हटा दोगे वहां से, और आप सेपरेटली एक और फाइल में, एक और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में, वो आपको मतलब उधर जर्नल नहीं बोला होगा कि आप सेपरेटली अपना नाम भेजे, आप अपने इंस्टीट्यूशन का नाम भेजे, आप अपना ये भी बताइए कि आप कौन हो, आप क्या करते हो, एक्सेट्रा। ठीक हो गया। सो आप वो सेपरेटली भेजोगे, एंड आखिर में इफ ऑल गोज वेल इंशाल्लाह वो फिर पब्लिश हो जाएगा। इनकी इश्यूज होते हैं, सम इश्यूज इट कैन बी द जनवरी जुलाई इशू वो बोलेंगे, या सिंपली जुलाई इशू बोलेंगे, और जिस तरह भी हमारा दिसंबर में आने वाला है तो वो दिसंबर इशू होगा। ठीक हो गया। और उसके खास मतलब खास तरीकाकार में वो पब्लिश होगा, एक खास फॉर्मेट में पब्लिश होगा। यू नो दे विल चेंज द फॉर्मेट अ बिट, एंड रिमेंबर इसमें एक और बात ये है कि एब्स्ट्रैक्ट इज वेरी नेसेसरी। The abstract must be very concise and brief as possible। They will say make it 150 words। Some journals might even say make it 250 words, but most of the time it is 150 or 200, 150 to 200। तो आपने बड़े मजेदार abstract हमेशा लिखने। ठीक हो गया। And again title has to be very attractive। They might even tell you to change the title। वो title change करने की भी बोल सकते हैं आपको कि यार title भी change करो। अच्छा, और इसमें एक और चीज मैं अभी मैं आ जाता हूँ। अब कुछ जर्नल्स जो है ना वो HEC रिकग्नाइज्ड है, कुछ जो है नॉन HEC रिकग्नाइज्ड है। इसमें फर्क ये होता है, अब जो लोग आगे वकालत करना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता वेदर दे डू इट इन HEC और नॉन HEC। बट फॉर दोज हु आर हु हैव द एम्बिशन टू जॉइन द एकेडेमिया, उनके लिए बड़ा फर्क पड़ता है। द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू बी अ फुल प्रोफेसर इज 15 years of teaching in the law institution you are, in the university you are, and 15 articles in HEC recognized journals। yes, हम questions में आखिर में आ जाएंगे। या मतलब या नोट डाउन करें कमेंट में, मैं फिर इंशाल्लाह आंसर कर दूंगा। एनीवे, to be a full professor that is the requirement। So you must have at least 15 HEC, and by HEC recognized higher education commission ने कुछ खास journals recognize किया होते हैं। HEC ने कुछ खास इन पे क्राइटेरिया, कुछ खास इन पे सिस्टम मैकेनिज्म दिया होता है कि आप इन मैकेनिज्म को फॉलो करें। तो उस जर्नल ने इस मैकेनिज्म को फॉलो करके वो फिर एप्लीकेशन भेजते हैं, एंड अगर उन्हें फॉलो किया तो एक्सेप्ट होते हैं, देन दे आर कंसिडर्ड एन HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल। सो फॉर दोज हु आर परसुइंग द एकेडेमिया, इंशाल्लाह जिन्हें प्रोफेसर बनने का शौक है, तो फॉर देम यू शुड जरूर देखें कि HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स कौन से है। इसके लिए वेबसाइट डेवलप हुआ है HJRS, आई थिंक बाय द HEC इटसेल्फ। उसमें आपको बकायदा लिस्ट मिल जाएगा कि ये जर्नल्स HEC रिकॉग्नाइज्ड है। अच्छा, इसमें अब कैटेगरीज भी है। there is W, X and Y। so the W category is like very very great, it's the best out of it। X is also very good, and आखिर में फिर Y आ जाता है। तो W कैटेगरी में ज्यादातर मैंने देखे फॉरेन जर्नल्स होते हैं, आपकी अमेरिकन जर्नल्स हो गए, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लॉ रिव्यू, वन ऑफ द बेस्ट। एक होता है आपका, क्या नाम है इसका, व्हाट डू वी कॉल इट, या यूके की जर्नल्स कुछ हो गए। यूके की जर्नल्स में आ जाते हैं आपका डनिंग लॉ, आई डोंट नो
there's a lot of them there basically. University of London law review, very famous again. And some of these law reviews have been there for 100, maybe 200 years, like the Harvard Law Review. उसमें बकायदा आपको ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे जो 200 साल पहले लिखा होगा. सो या बकायदा जजेस, प्रोफेसर्स, मतलब जूरिस्ट जो थे उन पुराने जमानों के, उनने 200 साल पहले लिखा होता, वो आपको वहां पब्लिश होके मिल जाएगा, उधर अवेलेबल होता है. सो एनीवे, यू हैव दीज जर्नल्स. अच्छा, जर्नल्स जो है वो दोनों सॉफ्ट कॉपी भी होते हैं, हार्ड कॉपी भी होते हैं. अच्छा, इसमें मुझे अब याद आया कि मैंने ये पहले जिक्र नहीं किया था जब मैंने वाज टॉकिंग अबाउट सोर्सेज. मैं अभी जिक्र करता हूँ. when you're doing literature review, तो आप, जब मैंने बोला ना आप आर्टिकल्स भी देख सकते हो लिटरेचर रिव्यू में, तो वो आर्टिकल्स आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिलते हैं. ज्यादातर आजकल सॉफ्ट कॉपी का एरा है, लेकिन वो हार्ड कॉपी भी होते हैं. मेरे पास अभी मैं फिर ऐसा करता हूँ ना, मैं हार्ड कॉपीज की ना, अगर आपकी आई थिंक मे बी यू हैव इट देयर इन योर यूनिवर्सिटीज. इफ नॉट, I will send a picture of what a hard copy journal looks like. इंशाल्लाह मैं आपको दिखा दूंगा, या बल्कि एक मिनट, give me a moment. अस्सलाम वालेकुम, can you see me? Yes. अच्छा, ये आप देख सकते हो एक जर्नल है. इट इज द पाकिस्तान जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी. दिस इज व्हाट वी कॉल. अब ये देख सकते हैं, इसमें यहाँ लिख सकते हैं आप, वॉल्यूम नंबर है, वॉल्यूम 9 है, इश्यू नंबर 3 है, जुलाई 2017. ठीक हो गया. और इसके साथ आप यहाँ देख सकते हैं वेबसाइट भी दिया हुआ है, pjcriminology.com. तो ये आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा. So when an article is published, it is not published solely, अकेला नहीं पब्लिश होता, इसके साथ कोई 4-5-6 और आर्टिकल्स भी पब्लिश होता है. तो यहाँ आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, मतलब देयर आर टोटल ऑफ 11 आर्टिकल्स हियर. Yes, 11. So there are 11 different people who have written articles and they are all published in this issue. And आप आगे देख सकते हैं the names of these people, right? The names and their name of their titles as well, the titles of their articles. तो यहाँ आप देख सकते हैं changing patterns of dispute settlement in an American city, Preet Kaur, gender perspective in corruption, the case of building permits, and trafficking in persons, faculty regulations, pervasive corruption and such and such. तो ये सारे आर्टिकल्स के नाम हैं. अभी पूरे नाम नहीं, और ये साथ लोगों के भी नाम है यहाँ. ठीक हो गया, कि जिन ने लिखा हुआ है. और ये आगे इनकी प्रीफेस होते हैं एडिटोरियल के, ये इस साल बने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जर्नल. अब ये देख सकते हैं, ये आर्टिकल एक आप देख सकते हैं कि ये टाइटल है, ये नाम है बंदे का, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये लिखा एब्स्ट्रैक्ट. ठीक हो गया. और जो नाम लिखा होता है इसके साथ हमेशा ना इसके नीचे यहाँ आ जाता है. सो आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में आगे बकायदा पेजेस है. ये आगे कीवर्ड्स आपके, इनकी यहाँ कीवर्ड्स है, लेफ्ट रियलिज्म, राइट रियलिज्म, कम्युनिटी पॉलिसिंग, एंड देन देयर इज इंट्रोडक्शन. देयर इज द इंट्रो, एक मिनट, सॉरी, देयर आर द कीवर्ड्स, द इंट्रोडक्शन, देन देयर इज द बॉडी ऑफ पैराग्राफ. तो ये चीज जो है ना आपको ऑनलाइन में मिल जाता है, बट दिस इज द हार्ड कॉपी, जस्ट टू शो यू. और ये जो ये लम्स लॉ जर्नल है, ये आप देख सकते हैं, इनकी भी काफी अच्छी माशाल्लाह इन्हें बनाया हुआ है. तो इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ उन्होंने बाहर लिखे हुए आर्टिकल्स के नाम, इनकी मतलब हर जर्नल की अपने पर्टिकुलर तरीका होता है. और यहाँ इनकी एडिटोरियल मेंबर्स, and then there is a note from the editors, etc. And then you can see the article here. Here is the name of the author, the abstract, and here is the introduction, and so on. Typically subscription basis में मिलता है. ये सब्सक्रिप्शन बेसिस में मिलते हैं कि आप मतलब मंथली, वो आपको बोलेंगे कि हमें मंथली इतने पैसे दे दो, हम आपको हर महीने एक कॉपी भेजेंगे. या वो बोलेंगे साल के इतने पैसे दे दो, हम आपको हर 6 महीने बाद जो नया इशू आता है
वो भेज देंगे like this is the July 2017 issue number 3 and volume number 9, and this is the Lum's Law Journal volume 4 issue 1 and 2017. So the problem is that you have to pay money for this, and not all law students can obviously afford it. Law professors can, LLM students maybe can do it, because most of the time LLM students are lawyers, उनकी already jobs होते हैं ज़्यादातर, उनकी कोई ना कोई financial support होता है, तो ज़्यादातर जो है ना इसका ये मसला होता है. सो आप सॉफ्ट कॉपी दे सकते हो, लेकिन इवन फॉर सॉफ्ट बाय हाँ इवन फॉर सॉफ्ट कॉपी उसका अब ये मसला होता है, कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं वो एक पे वॉल बनाते हैं. वट पे वॉल बनाते हैं जैसे आप फॉर एग्जांपल मैंने आर्टिकल अगर पब्लिश किया हुआ एक जर्नल में, उसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, एंड दानियाल फॉर एग्जांपल goes to that website and tries to download it but he can't. उसे एक नोटिफिकेशन आएगा, वो वेबसाइट उसे बोलेगा कि आप हमें पैसे दो, हम आपको दे देंगे आर्टिकल. So he will have to pay for that article. There are some journals like this. So what Daniyal does, then he has to somehow contact the author, me, और वो शायद मुझे contact करे, मैं शायद available ना हूँ, मैं शायद मिल नहीं सकूंगा, etc. And maybe I can't send him the article. हो सकता है कि मैं बकायदा वो नहीं कर सकता, मैं देना नहीं चाहता, इस तरह का मसले होते हैं. So in order to combat this, ये SSRN जैसे sites, मतलब there are multiple sites, ResearchGate हो गया, academia.edu हो गया, there is Google Scholar, there is SSRN. इन sites का ये फायदा होता है कि आप अपने नॉन पब्लिश पेपर्स, what we call working papers, what we call draft articles, आप उन्हें ना अपलोड करें वहां. इसका अब ये फायदा होगा, क्या कहते हैं कि आपकी जो नॉन पब्लिश पेपर है ना वो अपलोड कर देते हैं आपको. एंड SSRN पे क्या करते हैं, वो जर्नल्स को खुद बेचता है कि इस आदमी ने ये आर्टिकल लिखा है, आप क्या ये पब्लिश करना चाहेंगे. एंड इफ द जर्नल सीम्स इंटरेस्टेड दे विल कॉल यू. ठीक हो गया, दे विल से कि वी वांट टू पब्लिश दिस आर्टिकल एंड सच. बट एनीवे SSRN का ये फायदा है. तो मैं मतलब जब पहले कह रहे थे कि मेरे जो SSRN में आर्टिकल्स है उसमें काफी अभी आर्टिकल्स ऐसे हैं दे आर नॉन पब्लिश्ड, लाइक अ लॉट ऑफ देम, एंड 3 have been published. What do we call it? हाँ, उसकी मैंने साइटेशन दिखाया है, ये देखो फलाने जर्नल में ये और ये, आप यू कैन डू दैट एज वेल. बट मोस्टली SSRN का ये फायदा होता है कि जो आदमी मतलब आर्टिकल चाहता है, दे वांट द आर्टिकल, दे कैन गेट द अनपब्लिश्ड वर्जन फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग, वो पैसे ले और कुछ, और आप उस आर्टिकल की पब्लिश्ड वर्जन भी वहां अपलोड कर सकते हैं, बिकॉज यू आर द ऑथर, आप यू हैव द राइट टू मटेरियल, तो आप जाके बाकायदा अपलोड भी कर सकते हो वहां. लेकिन इन सम केसेस द जर्नल वो SSRN नहीं अपलोड करने देगा या कोई और वेबसाइट नहीं अपलोड करने देगा तब तक जर्नल ने परमिशन ना दी हो कि ये कहीं और अपलोड ना करे. सो इस तरह के मसाइल होते हैं. सो फॉर दोज पीपल who want to write an article and feel that they cannot yet send it to a journal because they want to improve upon it more, but वो still चाहते हैं कि वो ना उस आर्टिकल की जरा नाम भी बन जाए, एक उसकी पब्लिसिटी भी हो जाए, तो SSRN में बेशक भेज दे, अपलोड कर दे, एंड यू विल सी कि वहां बाकायदा आपकी लिस्ट बन जाते हैं. जैसे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 44 जो बहुत शुक्रिया रेयन साहब ने बताया, और इसी तरह हमारा क्या कहते हैं और भी काफी इस तरह के वेल नोन स्कॉलर्स हैं, उनकी भी आर्टिकल्स जर्नल्स में भी मिलते हैं, यहाँ भी मिल जाते हैं. शहबाज अहमद चीमा साहब के, जुबैर अब्बासी साहब के, डॉक्टर मुनीर साहब के, देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ देम, एंड देयर आर इवन अमेरिकन्स एंड इंडियंस एंड सच. तो SSRN का ये फायदा होता है. एंड हाँ, वापस आते उस बात में कि आपने पैसे देने होते हैं जर्नल को. मैं एक और बात बोल के, मैंने पहले ये बात किया कि आपसे पब्लिकेशन फी भी ले सकते हैं कि आप हमें इतने पैसे दें ताकि हम पब्लिश करें आर्टिकल. इसके साथ एक और काम क्या करते हैं, वो ये काम होता है कि वो कहते हैं कि यार हमें आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस भी दे दो, APC इसे कहते हैं ना, कि आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस, और एक और वो आपसे कुछ और अमाउंट भी लेंगे. वो अमाउंट किस लिए होगा, वो कहेगा कि यार आप अगर चाहते हो वी कैन मेक दिस आर्टिकल फ्री फॉर एवरीबॉडी, लेकिन आप हमें पैसे दे दो, एक्स्ट्रा पैसे दे दो इसके लिए. वो दे विल टेक एक्स्ट्रा अमाउंट, मतलब आपकी सेपरेट 20,000 पब्लिकेशन फी होगा, वो आगे बोलेगा 20,000 हमें और दे दो ताकि हम इस आर्टिकल को फ्री बना देंगे. एंड ऑफ कोर्स ज्यादातर ऑथर्स दे विल फील दिस इज अनफेयर and say no, I am not willing to pay it, so you can publish it.
but I will not make it free. I can't afford it, or I don't want to do it. होता है इस तरह की other person cannot article, and then he has to find the problem becomes that इसके लिए आप SSRN वगैरह ये काफी अच्छे साइट से इनमें आपको बहुत ज्यादा आर्टिकल्स मिल जाएंगे एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी तरह academia.edu है। इसी तरह आपके पास है व्हाट वी कॉल दिस academia.edu, रिसर्च गेट, गूगल स्कॉलर, यू विल फाइंड सो मच थिंग्स देयर फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आखिर में मैं बस ये कहना चाहता हूँ, ये मुझे काफी क्या कहते हैं, खुद एक स्कॉलर अल्हम्दुलिल्लाह और प्रोफेसर ने मुझे बोला है, जस्ट टू कंक्लूड इट, कि रिसर्च जो है ना होश का काम है, जोश का नहीं। आपने जितना आराम से रिसर्च पेपर लिखोगे, आर्टिकल लिखोगे, उतना ही क्या कहते हैं, उतना ही आपका आर्टिकल बेहतर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपने पहला आर्टिकल लिखा था, आई थिंक इट वाज इन नवंबर 22। No, not November, sorry. It was before that. It took me 5 months of researching, being critiqued, editing, and then writing, और उसकी फिर editing वगैरह वगैरह, ये सारे कर करके 5 महीने बाद मैंने जाके अल्हम्दुलिल्लाह उसे फाइनलाइज करके I uploaded it then. अल्हम्दुलिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी अच्छा आगे गया। एंड ऑफ कोर्स इसका ये फ़ायदा होता है SSRN का कि वो जो आर्टिकल होता है आप उसे बाकायदा और भी इम्प्रूव कर सकते हो, बिकॉज इट्स कॉल्ड अ वर्किंग पेपर, इट इज़ नॉट येट पब्लिश्ड। सो फॉर एग्जाम्पल आपने और भी उस पर काम किया है, आपने और भी उसे बेहतर बनाया है, आपने और उस बेहतरीन वर्जन को ना एक जर्नल पे भेज दो, send it to a journal, leave that unpublished version there for anyone who wants to access it, and inshallah should that original version be published, the the better version be published, you can then get that and upload it in SSRN, and if it is not needed, you may just go to SSRN and you may just show कि देखो यहाँ मैंने वो लिखा हुआ है। इनफैक्ट ये मैं दिखा देता हूँ, कैन यू सी इट? Yes, sir. Yes, you can see. अच्छा, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आर्टिकल लिस्ट है। इसमें आप देख सकते हो डाउनलोड्स भी है, आपके एक रैंक भी बन जाता है, एंड यू कैन सी योर नेम एंड योर क्रेडेंशियल्स हियर कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी या वट एवर यूनिवर्सिटी। एंड अगर आप नीचे जाओगे ना, आप देख सकते हो यहाँ कुछ आर्टिकल्स ऐसे अभी पब्लिश नहीं है, यू कैन सी इट नीचे जब जाएंगे, एंड दीज आर एंड सम ऑफ देम आर स्टिल पेंडिंग, आई हैव सेंट सम they are still being reviewed, and they may inshallah be published, may not accept, लेकिन मैं